Good morning, sir. Morning, everybody. Okay, let's come to example 2. Untrimmed cargo. Example 2. Untrimmed cargo. Can somebody just read the question for me, please? Anybody who has the book in front? Yes, sir, I'll read. Yeah, Yes, please. sir. A box-shaped barge Mhm. of 24 into 6 meter 24 into 6 meter. has a light draft of Mm. 0.778 meters in fresh water. Fresh water. Okay. Ore of SF 0.5 is loaded 2 meter. 0.5. Yes, sir. 0.5 is loaded 2 meter high Mm. at the center, ठीक है. sloping steadily downwards to 0 meter ठीक है. at the forward and after ends. ठीक है. Draw the Draw the. SF and BM diagrams to scale. Okay. All right. So this is a classic question of untrimmed cargo. All right. So let's draw a diagram first. So diagram बनाते हैं. ये हमारी बार्ज है. वन होल्ड की बार्ज है. ओके. एंड बॉक्स शेप्ड है. ये आफ्ट है. ये फॉरवर्ड है. एंड इसमें हमने ओवरलोड किया है. तो ये हमारी पीक है. ये हमारी पीक है. और इसको पीक की जो हाइट है हमारी, ये 2 मीटर की है. एट द सेंटर, 0 एट द फॉरवर्ड एंड आफ्टर एंड. और ये पीक हमारी ऐसे दूसरी साइड तक जा रही है टिल द ब्रेथ. सो पूरे होल्ड में हमने ऐसे ही लोड करा है. सो दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ अनट्रिम्ड कार्गो. तो हाउ डू वी बिगिन? हमें इसका एसएफबीएम डायग्राम बनाना है. हाउ डू वी बिगिन दिस थिंग? सो सबसे पहले तो मेरे को पॉइंट्स चूज करने हैं. कितने पॉइंट्स मैं लूं मिनिमम? तो एक पॉइंट तो ये हो गया. 3 points, sir. नहीं, इसमें ना यू विल टेक वन मोर पॉइंट इन बिटवीन द टू, और उस पे ये हाइट है. उसका रीजन मैं बताऊंगा अभी क्यों. फिर ये पॉइंट सी हो गया. फिर इन दोनों के बीच में भी एक पॉइंट लूंगा इन द मिडल. इसको पॉइंट डी कह रहा हूं. और ये पॉइंट ई है. तो बेसिकली such a kind of a thing we will need to do with 5 points. Why we are taking point B and D? Because यहां पे तो ये मेरा कॉलम ऑफ कार्गो 2 मीटर का है. यहां पे
मेरा कॉलम ऑफ कार्गो 0 मीटर का है, तो इन दोनों के बीच में एक और कॉलम ऑफ कार्गो है मेरा, जिसको मुझे लेना है. एंड एज वी प्रोग्रेस यू विल अंडरस्टैंड व्हाई आई हैव डन इट, बिकॉज द कार्गो वेट पर मीटर जो यहाँ पे एक्ट करेगा will be due to the height of cargo over here. Similarly, इसकी हाइट h1 है और इसकी हाइट h2 है. So the cargo weight per meter acting at B or D due to h1 and h2 also I need to calculate. And that's the reason why we solve this problem with 5 points, the Okay, sir. least number of points. It will become more clearer as we proceed. So let me calculate light ship weight. That will be volume into density. So 24 into 6 into 0.778 into 1.0. 112. 112 tons. Whole number पे लेंगे basically, because the idea of this decimal is to get it into a whole number. That's why. This is a light ship weight. Now, cargo weight will be volume divided by stowage factor. Volume of the cargo. That means area of this triangle into the breadth. That is 6. This will give me the volume of the cargo divided by storage factor. ये समझ आ गया मैंने क्या किया? Is this okay with everybody? Yes, area into breadth divided by storage factor. Yeah. So basically मुझे वॉल्यूम चाहिए, तो मैंने एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकाल लिया और उसको मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ कर दिया, बिकॉज इट इज रनिंग अलोंग द फुल ब्रेड्थ, तो वो मेरे को वॉल्यूम दे देगा. सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू द विड्थ डिवाइडेड बाय स्टोरेज फैक्टर. Two eight eight. 288 टन. ये ओके है सबके लिए? Is this okay for everybody? All right. Yes, sir. Therefore, total W acting downward will be 112 plus 288. 400. 400. Therefore, total buoyancy acting upward is also equal to 400. ठीक है? Is that okay?
अब आ जाते हैं light ship weight per meter acting at any point will be equal to 112 ton divided by the length of the vessel. 4.667. 0.667 tons per meter acting downward, so negative. All right. Total buoyancy per meter acting upward will be equal to 400 divided by 24 acting upward, so positive. So 16.667. 16.667 tons per meter. Okay. Now, let me give some names to these columns also. A, B, C, D, E. इसको F कह देता हूं, इसको G और इसको H. तो मेरे को ये H1 और H2 की हाइट निकालनी है. So that I can find out by similar triangles. ठीक है, is that okay? Yes. So मुझे H1 की हाइट चाहिए और H2 की हाइट चाहिए. So my triangle AFB is similar to triangle AGC. Therefore, perpendicular over base 6 is equal to perpendicular 2 upon 12. Therefore, H1 is equal to 1 meter. And similarly, H2 is also equal to 1 meter by the same logic. Is this okay with everybody? Yes, sir. Now, I am interested in finding out the cargo weight per meter. So the cargo weight per meter acting at any point, कोई भी point हो, will be equal to the volume per meter divided by stowage factor. मत कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर चार्ली पे कोई कार्गो वेट पर मीटर एक्ट कर रहा है, या ब्रावो पे, या डेल्टा पे, या अल्फा पे, या एको पे, तो वो कार्गो वेट पर मीटर will be volume per meter divided by storage factor. No difficulty in understanding this formula. Okay. Okay. Right. Volume per meter will be length into breadth into height of the column divided by storage factor. Is this okay with everybody?
एनी वॉल्यूम, मतलब अगर मैं ब्रावो पे लेता हूं कोई कॉलम जो कि उसका वॉल्यूम ले रहा हूं, तो कहने का मेरा ये मतलब है कि अगर मेरा ये कॉलम है ऑफ कार्गो जो कि ऐसे जा रहा है, ये कॉलम की लेंथ, इस कॉलम की ब्रेड्थ और इस कॉलम की हाइट divided by the storage factor will give me the weight per meter acting at Bravo. Similarly at Charlie. Similarly at Yes. Alpha. Yes. So since I am finding out per meter, so the length will be 1 meter. Breadth will be 6 meters. Height is a variable. So उसको h ले रहा हूं. Divided by storage factor. So the cargo weight per meter at any point can be given by this formula 12h. It is a function of h. That means जो भी h की वेरिएशन होगी वो मुझे कार्गो वेट पर मीटर देगा एट एनी पॉइंट. सो कार्गो वेट, सर ये लास्ट वाले नहीं समझ आया. लास्ट वाला नहीं समझ आया. ये 1 मीटर समझ आ गया. सर ये भी बता दीजिएगा, मैं लास्ट के 2 लाइन से समझा. सो बेसिकली ये L इंटू बी इंटू एच समझ आ गया. हाँ यस सर. सो मैं वॉल्यूम पर मीटर, वॉल्यूम फॉर 1 मीटर, तो लेंथ मेरी 1 मीटर, लेंथ मेरी 1 मीटर, कॉलम की लेंथ 1 मीटर, कॉलम की विड्थ 6 मीटर, कॉलम की हाइट h वेरिएबल है. ठीक है सर. इसको सॉल्व किया तो ये 12h आता है. 6 डिवाइडेड बाय 0.5. ठीक है सर. ओके. So cargo weight per meter at alpha or echo will be equal to 12 into height. Height at alpha and echo is 0. Will be 12 tons per meter. This is the cargo weight per meter. Similarly, the cargo weight per meter is at Bravo सर एक और इसमें डेल्टा. अल्फा और इको में जीरो नहीं आएगा? 12 इंटू जीरो करेंगे अगर हम. ओ सॉरी गलत बोल गया, मैं गलत कर गया. सॉरी 12 into 0. 12 into 1 is 12. Bravo delta is 12 into h. H is 1. Will be 12. And similarly, cargo weight per meter acting at Charlie will be 12 into 2 is equal to 24. कहने का मतलब ये है कि जो कार्गो वेट पर मीटर ब्रावो चार्ली डेल्टा एको अल्फा पे एक्ट कर रहा है वो उसका इंस्टेंटेनियस कार्गो वेट है, वो उस मोमेंट का है, वो उस पॉइंट का है. ये समझ में आया? एनी डाउट? No. ओके. अब एक लाइन आपकी किताब में लिखी हुई है, मैं उसको सुनाता हूं. एंड बड़ी अच्छी लाइन है. सपोजिंग एक रनर भाग रहा है रेस, ओके, और जब वो रनर भागता है
एंड जब वो टेप को ब्रेस्ट करता है, यानी कि ही इज एंडिंग द रेस, उस वक्त उसकी स्पीड रिकॉर्ड करी गई। जब उसने टेप को ब्रेस्ट किया, हिज स्पीड वाज 36 किलोमीटर पर आवर। तो इस 36 किलोमीटर पर आवर का क्या मतलब है? डज इट मीन दैट ही रैन 36 किलोमीटर्स? द आंसर इज नो। Does it mean does it mean that he ran for 1 hour? The answer is no. It is the instantaneous speed which is measured when he breasted the tape, when he crossed the line. उस वक्त जो मेजर करी गई, यानी कि at that instant, at that moment, was 36 kilometers per hour. Similarly, using that same logic, the cargo weight per meter at alpha acts only at alpha, not to the right of alpha, not to the left of alpha. Similarly, cargo weight acting at Bravo, only at Bravo, it is at that instant, not to the right, not to the left, is 12. And similarly, Charlie is 24. ये वो उसकी simile दे रहा है. So this is the SF for that point then. No. This is the cargo weight per that point. This is the weight of cargo. Weight of column of cargo. Okay. It is the weight of column of cargo. मतलब सर इसके और भी मान लीजिए और भी जगह वेट निकालना हो तो फिर और पॉइंट्स बढ़ा दें हम। एब्सोल्युटली राइट। अगर मुझे और भी पॉइंट्स पे चाहिए हों इसके वेट्स, तो फिर मैं और भी पॉइंट्स लूंगा और उसकी भी हाइट निकालूंगा उस पॉइंट्स की, और देयरफॉर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, बिकॉज इट विल बी अ फंक्शन ऑफ द हाइट। ठीक है, इज दैट ओके? Points A, B, C, D, E. Let us start with light ship weight. Light ship weight हमने निकाला per meter. Light ship weight per meter is सर ऊपर का बोर्ड में दिख रहा है। अच्छा, ऊपर का दिख नहीं रहा है, एक मिनट, जस्ट अ सेकंड। अब ठीक है? सो लाइट शिप वेट पर मीटर मैंने निकाला -4.667 -4.667 -4.667 -4.667 एंड -4.667। ये मेरे लाइट शिप वेट्स आ गए। अच्छा, अब इसमें मैं करता हूं कार्गो वेट्स पर मीटर। अल्फा पे है 0, ब्रावो पे है -12 एक्टिंग डाउनवर्ड है, चार्ली पे -24, डेल्टा पे अगेन -12 एंड एको पे 0। ये मेरे कार्गो वेट्स पर मीटर हो गए। Total W per meter acting at any point will be sum of all this, -4.667 -16.667 -28.667 -16.667 -4.667। Is this okay with everybody? Total buoyancy per meter acting upward, सब जो सारे पॉइंट्स पे एक ही है, +16.667 +16.667 +16.667 +16.667
प्लस 16.667। यहां तक ओके है सबके लिए? यस सर। कोई डाउट किसी को? एनी डाउट एनीबडी? क्लियर है? Difference of these two fellows gives me what? लोड पर मीटर। लोड पर मीटर। बिल्कुल ठीक। लोड per meter, whichever is greater. So plus 12, 0, minus 12, 0, plus 12. नेक्स्ट क्या करूं? लोड कर्व। लोड कर्व, बिल्कुल ठीक। So now we draw the load curve. So लोड कर्व पे आ जाते हैं। All right. So maxima plus 12, minima minus 12. So लोड कर्व बना रहे हैं। A, B, C, D, E, plus 12, minus 12. All right, alpha plus 12, plus 12. 0 से होता है, उसके लेफ्ट पे 0 है, उसके बाद में plus 12 है। ब्रावो 0, ब्रावो 0, चार्ली minus 12, चार्ली minus 12, डेल्टा 0, डेल्टा 0, echo plus 12, echo plus 12. All right, alpha, लेफ्ट ऑफ अल्फा 0 चल रहा है, 0 से लेके plus 12 तक गया अल्फा पे। अल्फा टू ब्रावो plus 12 to 0, plus 12 to 0. ब्रावो टू चार्ली 0 to plus minus 12, 0 to minus 12. चार्ली टू डेल्टा minus 12 to 0, minus 12 to 0. डेल्टा टू echo 0 to plus 12, 0 to plus 12. Echo plus 12 to 0, echo 0 to plus 12. This is my load curve. Any doubt up till now? Any doubt up till now? All right. SF पे आ रहा हूं। Area under the load curve to the left of the point gives the value of SF at that point. So area to the left of alpha 0. Area to the left of bravo, this area. So half into 6 into plus 12 is equal to plus 36. Is it okay with you? Is Bravo okay with everybody? यस सर। Okay. अब चार्ली का कैसे कैलकुलेट करोगे? How will you calculate Charlie?
ट्राइंगल तक BC और एक और जो नीचे है उसका एरिया कैलकुलेट करके देन विल सबट्रैक्ट फ्रॉम द SFD। तो कैसे करोगे? सर वो सिमेट्री है ना। बिल्कुल ठीक। मैंने तो आपको equal फास्ट भी तरीका जीरो। मैंने आपको फास्ट तरीका बताया हुआ है। ये सिमेट्री है तो सिमेट्री यूज करो सीधा बस अब। +36 -36 रिजल्टेंट 0. Is this okay with everybody? Because these are the only ways you can make to save time. अदरवाइज आप करने गए तो लंबा चौड़ा खींचेगा। अब आपको यहाँ पे सिमेट्री यूज करनी है। इज दैट ओके? एरिया फॉर डेल्टा +36 -36 एंड -36 रिजल्टेंट -36 and echo obviously will be 0. Is this okay with everybody? Anybody any doubt in understanding SF values at any of the 5 points? किसी को कोई डिफिकल्टी है? सर इसमें जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वी डोंट नीड टू शो कि एरिया वी हैव कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द ट्रायंगल फॉर्मूला, वी जस्ट राइट दैट यूजिंग द सिमेट्रिकल अरेंजमेंट। नहीं, पहले पे किया हमने एक में करके, बाकी मैं सिमेट्री में चल रहा हूँ। तो देन वी विल जस्ट राइट दैट यूजिंग द सिमेट्रिकल अरेंजमेंट और डायरेक्टली हम उसकी वैल्यू डाल देंगे। बस दैट्स इट। बिकॉज मेरे पास ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं है अब कि मैं हर एक को कैलकुलेट करने जाऊं। अगर मैं करने गया तो मतलब मेरे 5 मिनट और बर्बाद होंगे। अभी मुझे आगे और पहुंचना है, इसलिए वैसे ही लंबा है, तो इसलिए मेरे को जहां जहां मैं मौके यूज कर सकता हूँ यही मौके हैं जहां पे मैं शॉर्टकट यूज करूंगा। और कोई तरीका नहीं है मेरे पास ये क्वेश्चन को 25 मिनट में सॉल्व करने का। यस सर। ठीक है, सो दिस विल डू व्हाटएवर यू आर सीइंग ऑन द क्वेश्चन में सिमेट्री ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में ऐसी आती है या अलग-अलग भी आ सकते हैं? ऐसी आती है, ऐसी आती है, हर क्वेश्चन में ऐसी आएगी ताकि सिमेट्री यूज कर सको। ठीक है, इज दैट ओके? अब मैं एसएफ पे जा रहा हूं। मैक्सिमा 36, मिनिमा -36। सो अब मैं एसएफ का बना रहा हूं। ए बी सी डी ई +36 -36। All right. A 0 A 0 B +36 +36 C 0 C 0 D -36 D -36 E 0 E 0। हाँ जी, गोल्डन रूल्स। कैसे ज्वाइन करूं? A and B। We'll apply the same BM curve rule here also. Area under a straight line at an angle to the base will be a curve। टोन डाउन वाला ही यूज करेंगे। बिल्कुल ठीक, Okay. बिल्कुल ठीक। सो फॉलोइंग टू द राइट A and B। स्पून डाउन। Spoon down, spoon down। B to C, falling to the right। Concave down. स्पून डाउन। Okay, spoon down। C to D, rising to the right। Spoon up, concave up। D to E, rising to the right। Concave up। ये मेरा बना। प्लीज रिमेंबर, अप टिल नाउ मैं ये रूल को यूज कर रहा था बीएम कर्व के कैलकुलेशन के कर्व ड्रॉ करने के लिए। इट वाज बीइंग यूज्ड फॉर बीएम कर्व। क्वेश्चन नाउ दिस रूल इज बीइंग यूज्ड फॉर ड्राइंग एसएफ कर्व।
It was nothing to do with BM curve per se or SF curve per se. That is the property of a straight line. ये geometry है. Area under a straight line will give a curve. That is the funda. We were using it on all those questions of beams up till now for drawing basically the BM curve. Now it is being used for SF curve. एक line एक grade ऊपर आ गया. Understood, sir. ठीक है. Okay. All right. Area under the SF curve gives me the value of the BM. अब ये curve आ गया. So how do I find out the area? Simpson's rules. So I will try to find out the area up to Charlie and then use symmetry. So therefore, ordinate Simpson multiplier. Ordinates are A पे 0, B पे +36, C पे 0. Simplest rule to use 141. Area function 0 plus 6 4s are 24, 2 4 3s are 12, 144, 0. SOP plus 144. Area up to Charlie is equal to H by 3 into SOP. H is what? 6 into SOP plus 144 is equal to plus 288 up to Charlie. So bending moments up to Charlie plus 288. Alpha is 0. So Bravo will be half of plus 288. Now I'm using symmetry. Will be equal to plus 144. So tell me the area for delta using symmetry. Plus 144. Plus 288 minus 144 resultant plus 144 and echo 0. resultant 0. Hanji, any doubts so far? सर ये डेल्टा एंड इको का एक बार बता दोगे डीएम? Delta and echo, okay. So मुझे चाहिए area under the curve up to delta, total area to the left of delta. इसका मेरा अल्फा टू चार्ली का मैंने एरिया निकाल लिया था प्लस 244. इसका मेरे को पता है माइनस 144 है. तो रिजल्टेंट एरिया मेरा प्लस सॉरी गलत 288 है. 288. So the resultant area will be plus 288 minus 144. So the resultant will be plus 144. Is delta okay with everybody? Yes, sir. Yes. And therefore, similarly, echo will be plus 288 minus 288.
Is it okay? Yes, sir. Okay, thank you. Okay. Last part of the question, plotting of BM curve. We notice all the values are positive. That means baseline will come नीचे. Baseline is coming नीचे. A, B, C, D, E. Okay. Plus 144. 0. Alpha 0. Alpha 0. Bravo. Plus 144. Plus 144. Charlie. Oh, sorry. Plus 288 भी है. I forgot that. There is a plus 288. I forgot that. This is plus 144. There is a plus 288. Bravo, Charlie, I forgot. Plus 288 भी है. Bravo. Plus 144. Plus 144. Charlie. Plus 288. Plus 288. Delta. Plus 144. Plus 144. Echo. 0. Echo. 0. Hanji. How should we join them? Straight line. Which rule are you using? अभी Try कर्व to- के लिए कोई रूल नहीं आप लिखो ऐसे. Correct. बिल्कुल ठीक. तो अब लिखो. Now you come to the last one. That is, now you're coming on to 8 का थर्ड पार्ट. 8 का third part पे आ जाओ आप. Now you come to 8.3. So far हमने 8.1 में लिखा area under a straight line parallel to the base. ठीक है ना. 8.2 में लिखा area under a straight line at an angle to the base. अब हम 8.3 में आ रहे हैं. And write down area under a curve will also be another curve. Area under a curve will also be another curve. The second curve will concave up if the first curve rises to the right. सर रिपीट करना लाइन प्लीज. पहली लाइन आ गई थी. Yes, sir. The second curve will be concave. वो वाली लाइन रिपीट करना. The second curve will concave up if the first curve rises to the right and will concave down if the first curve
falls to the right. Okay. Now we try to understand. सर ये फर्स्ट कर्व है, ये सेकंड कर्व बन रहा है. Okay. So you tell me A to B क्या होना चाहिए? कॉनकेव अप. कॉनकेव अप. कॉनकेव अप. चम्मच अप. ये समझ में आ गया कि नहीं? यस सर. अब B to C. कॉनकेव डाउन. डाउन. Concave. Concave down. Concave down. C to D. कॉनकेव डाउन. Is it okay with everybody? D to E. अप. कॉनकेव अप. Spoon up. ये बन रहा है मेरा BM कर्व. And looking at the curve, what is the condition of the vessel? सैग हो गया. सैग सर. Sag. वो मेरे को यहाँ पे एविडेंट है. sag since positive curve. ये तो ये एविडेंट है, ये सैग होने वाला है. हाँ जी, डाउट्स? क्लियर है? यस सर. तो एक बार सिम्पसन रूल रिफ्रेश करवा देते हैं. क्यों? भूल गया सर, 2 साल हो गए. सिम्पसन रूल को रिफ्रेश. तो रिवाइज करना पड़ेगा. 4 साल हो गए सर फिर से. अरे भाई, सिम्पसन रूल को कैसे बोल सकते हो? हैं? नहीं कर लेंगे. नहीं तो सिम्पसन बाबा तो नाराज हो जाएंगे अगर ऐसा हुआ तो. सिम्पसन रूल तो हमने अभी उसमें भी किया है, क्या नाम है, जब हमने सेंटर ऑफ प्रेशर किया था. वीडियो अपलोड कर दीजिए सर, जहाँ अगर कोई है तो, जिसमें वीडियो अगर किसी क्लास में. हाँ सर, उसमें और क्या, उसी देख देख लेंगे, रिवीजन हो जाएगा. नहीं, एक मिनट, कौन से बैच के हो आप लोग? तो मैं तो अप्रैल बैच हूँ. अप्रैल बैच है ना, तो अभी आ जाएगा, तो अभी रिवाइज हो जाएगा. अभी तब ठीक है. अभी इट गेट रिवाइज्ड. अभी सेंटर ऑफ प्रेशर कराऊंगा ना अगले महीने, तो इट गेट रिवाइज्ड. मैंने सोचा फरवरी बैच वाले पूछ रहे हैं. फरवरी बैच को दे कैन नॉट आस्क. सर एक्सरसाइज 11 के क्वेश्चन नंबर 2 में सर एसएफ कर्व बहुत अजीब सा बन रहा है. कौन सा क्वेश्चन? एक्सरसाइज 11 क्वेश्चन नंबर 2 ट्रिम कार्गो का है सर. ट्रिम कार्गो का मैं देख लूंगा एक बारी. लेट मी हैव अ लुक एट इट. एक्सरसाइज 11 ये कौन सा हुआ? क्या बॉक्स वेसल वाला है सर. हाँ, आगे पढ़ो, क्या लिखा है उसमें. जस्ट रीड द क्वेश्चन. ये नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं. लेट्स डू इट इन द नेक्स्ट क्लास. आज वैसे ही हेवी हो गया. तो लेट्स डू इट इन द नेक्स्ट क्लास. इज इट ओके? कल कर लेते हैं. ओके हाँ, सर. कल करते. कल याद करा देना. ओके, चलो जी, इसको रिवाइज कर लेना, इस क्वेश्चन को, काफी आता है. ओके, चलो, सी यू, बाय. बस.